Hello guys, welcome to the Coders Point. Our today's question is count partition with even sum difference. So let's see what exactly question is. As we can see on the screen, like you are given an integer array nums of length n. Our partition is defined as an index I where 0 is less than equals to I less than n minus 1, splitting the array into two non-empty subarrays such that left subarray contains indices 0 to I and right subarray contains indices I plus 1 to n minus 1. Return the number of partition where the difference between the sum of the left and right sub array is even. Okay. सो गाइज इस क्वेश्चन में हमको करना सिर्फ इतना है कि हमारे पास एक एरे होने वाला है जो कि नम्स एरे है. वी हैव टू डिवाइड दैट एरे इन एनी टू पार्ट्स एंड देन आफ्टर वी हैव टू चेक कि उसका जो डिफरेंस है दैट इज इवन और ऑड. If it is even, then we need to count that into a separate variable, and finally we have to return the count. Okay, so let's see how we can solve this question. Okay, let's start with our first example, that is 10 10 3 7 6. Now what we can do is कि हम दो सब एरे बना सकते हैं. लेफ्ट वन which can be nums 0 to I and right one which can be nums I plus 1 to n minus 1. अब इनका difference needs to be difference is equals to sum of left minus sum of right. Okay, so this is what we have to do, and then we need to count how many partitions given us a even difference. Now to do this हमारे पास एक बहुत सिंपल सा वे है to do this, that is हम क्या कर सकते हैं, we can calculate sum of the entire nums array. So the idea is that let's say I am calculating the sum s is equals to sum of entire nums array. Now after calculating the sum we have to check that total sum is odd or not. If s is equals to 0 that means it is even. और इस केस में क्या होगा, इस केस में जो भी पार्टीशन आप क्रिएट करोगे that can be either even or odd on both sides. और उस केस में whatever x minus y, x means partition 1 और y means partition 2, whatever x minus y you will do, you will always get even number, and in this case you can return total length of this nums array. Okay, so what I am saying here is that आपने पूरे nums array का sum निकाल लिया. After calculating the sum you are checking that sum is even or odd. अगर वो sum even है तो उस केस में जो भी partitions आप create करोगे sum nums array के, या तो वो इवन होंगे इन नेचर या वो ऑड होंगे इन नेचर, और जब भी आप उनका डिफरेंस निकालोगे यू विल ऑलवेज गेट इवन. सो बेसिकली यू कैन रिटर्न द लेंथ ऑफ एंटायर नम्स. इसी तरह से हम नेक्स्ट ये कर सकते हैं कि वी कैन चेक इफ़ इट इज़ ऑड, जो हमें सम मिल रहा है नम्स का, इफ़ इट इज़ ऑड, इफ़ एस मॉड 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स इट इज़ ऑड. और उस केस में आप कोई भी पार्टीशन करो उसमें उसका x माइनस वाई विल ऑलवेज ऑड. तो उस केस में हम 0 पार्टीशंस रिटर्न कर सकते हैं एज ए आंसर, बिकॉज आप किसी भी तरह से एरे को डिवाइड कर लो, अगर ओवरऑल सम ऑड है यू विल ऑलवेज गेट 0. सो दैट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स ट्राई टू राइट द लॉजिक एंड वी विल सी दैट इट इज वर्किंग और नॉट. ओके, सो व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना फर्स्ट कैलकुलेट टोटल सम is equals to sum of entire array num. Then we are gonna check कि जो sum है array का that is divisible by 2 or not, means वो even sum है या odd sum है. total sum 2 equals to 0. If it is equals to 0 then we can return length of num minus 1 else
return 0. Now let's run this and check it is working or not. Okay, there's a small mistake. We have to s here. Here as well we have to add s. Okay, yeah, let's run it. Yes, our all cases are successfully submitted and accepted. Now let's run the final submission. Perfect. So yeah, you can see guys that we have successfully submitted our solution, and that is how we can solve this question. I hope you guys like the video. Now we will meet in the next video with a new question. Thank you.